Hey, hi everyone. So today, as it's been a long time that we have interacted, and जैसे कि आप लोगों ने thumbnail में देख लिया होगा, maybe we'll discuss something about how the Iran-Iraq war, and then maybe something about जो हमने कंपनी शायद पहले डिस्कस किए थे उनके लिए वी विल डिस्कस अबाउट दोज कंपनीज। किसी को अगर ज्वाइन करना हो सो जैसे कि हम पहले भी करते थे तो उसके लिए लिंक मैंने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे दिया। अगर आप चैट बॉक्स में जाके देखेंगे सो द लिंक इज देयर एंड मे बी यू कैन join from there. So as of now, but I don't see anyone there. So that's also perfectly fine. So just give me 1 second. Nifty has come uh, somewhere around 23,000 का लो जो निफ्टी ने ब्रेक किया है एंड कई सारे स्टॉक्स जो हमारे हैं वो भी काफ़ी नीचे जा चुके हैं एंड बिलीव मी लास्ट दिस इज 2026 और 2020 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आई एम गेटिंग लाइक मैंने कुछ लोगों को कॉल किया अपने फ्रेंड्स को एंड इट्स द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5-6 years व्हेन आई एम गेटिंग देन द पीपल आर सेइंग लाइक कि हमें अब स्टॉक में पैसे नहीं डालने हैं। सो इट्स बीन लाइक 5-6 years में फर्स्ट टाइम ऐसा आई वुड हैव हर्ड। उसके पहले मुझे जितने भी कॉल्स आए होंगे तो पीपल वुड हैव सेड कि नहीं कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और या फिर कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स पीपल सेड। सो अगर लोग सच में इतने परेशान हैं या आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक कि लोग अगर दे आर वरीड सो आई एम लाइक देयर मे बी अ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि somewhere next 6 months, next 7 months, next 8 months, the market should turn from here. That's what I believe. The worries are more not about the war. The worries जो मुझे लगता है इंडिया के लिए those worries are regarding war more of uh, when they have the AI like जो अगर हमारे AI आते हैं तो कितने हमारे white collar jobs जो हैं they will be they will have an issue like अगर अगर लोगों के वाइट कलर जो हमारे लोग हैं जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो हमारे कंसल्टिंग बिजनेसेस में हैं और दूसरे वाइट कलर जॉब्स हैं अगर उनके लिए बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज दैट आई विल बी डिस्कसिंग हमने ऑलरेडी उनके वीडियोस पहले बना रख चुके हैं सो आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट शेयर इट विद यू। सो दिस इज अ कंपनी पी एन गाडगिल ज्वेलर्स जिसके लास्ट टाइम हमने बनाया था वीडियो। सो पी एन गाडगिल व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कंपनी को ने दिस टाइम लाइक 2-3 days बैक दे मेड एन अनाउंसमेंट जहां पर उन्होंने बोला है कि उन्होंने 10,000 crores के एनुअल रेवेन्यू फर्स्ट टाइम दे हैव टच्ड। सो एनुअली द कंपनी इज प्रोजेक्टेड टू हैव लाइक जो 2026 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें द कंपनी इज प्रोजेक्टेड टू हैव रेवेन्यूज ऑफ समवेयर around 450 crores. So the company is supposed to have revenues of 450 crores approximately. Like 3 quarters के already आ चुके हैं and fourth quarter के जब revenue like fourth quarter के जब results आएंगे so we'll be seeing कि somewhere around 450 crores जैसा projection of revenue already आ गया है. I've just multiplied it by the margin on the previous 3 quarter average. So somewhere around 450 crores का PAT they are expected to do. एंड अगर आप अभी देखें तो 7,500 और 7,600 करोड़ का मार्केट कैप होगा सो दैट विल बी अवेलेबल समवेयर अराउंड लेस देन 20 का मल्टीपल पर आपको अवेलेबल है। सो कंपनी के व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम लास्ट टाइम व्हेन वी डिड द एनालिसिस ऑफ द कंपनी टिल नाउ। सो कंपनी ने बोला था कि लास्ट ईयर में उनके सम 220 करोड़ 230 करोड़ का उनका अप्रोक्सीमेटली पैट था विच दे said they will be growing approximately 300 crore but it's good that company has exceeded their own guidance and जो PAT margins है company के they the recent quarters में they expanded approximately 5.2% में। हालांकि जो मैनेजमेंट है they are saying कि लॉन्ग रन में जो पैट मार्जिन है वो रह सकते हैं 4% टू 4.2 4.3% के अराउंड पैट मार्जिन लॉन्ग रन में रह सकते हैं। दिस कुड बी ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक जो अभी रीसेंट क्वार्टर के हैं बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली जो इस क्वार्टर में है उनके द डिमांड ऑफ द आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन द सेंस ऑफ मोर स्टडीड ज्वेलरी एंड ऑल
ऑल दोज मिक्स वुड बी देयर. सो बट लॉन्ग रन में जो उनके सस्टेनेबल मार्जिन है वो 4% के अराउंड रहेंगे. दैट्स व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड. नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो कंपनी इज अवेलेबल क्वाइट अ रीजनेबल वैल्यूएशन. So this is the one company that we discussed last time. Sula Vineyard. Sula Vineyard. Last time when I discussed, like it was one of those first videos जो हमने बनाया था नहीं अपने चैनल पर, and video got a lot of comments like and views also from the people. And हमने राजीव जी जो इनके प्रमोटर हैं उनके बारे में कहा था कि वो जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते. लाइक ही इज लाइक सम हम कुछ एक्विजिशन करेंगे एंड देन नेक्स्ट कॉल में आके बोल रहे हैं अच्छा हम एक्विजिशन नहीं करेंगे. So he himself was not very clear about his thought process. Apart from that, he was reducing his stake in the company. Like he was a constant seller in the company. का जो भी इनका स्टेक था वो कॉन्स्टेंटली ही वाज रिड्यूसिंग दैट स्टेक. सो वी वर क्वाइट नेगेटिव ऑन द कंपनी. एंड आप अगर देखेंगे वहाँ से स्टॉक प्राइस आई गेस मोर देन 50% डाउन है वहाँ से. 4,000 करोड़ की मार्केट कैप थी उस टाइम और अभी 1,300 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली मार्केट कैप बची है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो द की रीजंस व्हाट आई फील इज लाइक एक तो ये है कि इंडिया में वाइन का मार्केट जो है वो वैसे ही बहुत छोटा है. लाइक 2,000 करोड़ का मार्केट अगर इंडिया में वाइन का है और उस मार्केट में अगर इंडिया में एक कंपनी जो लो 50% मार्केट ले भी लेते हो 2,000 करोड़ के मार्केट में 2,500 करोड़ का मार्केट होगा टोटल. तो आपका रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम इट कैन बी लाइक 1,000-1,200 के अराउंड 1,000 करोड़ टू 1,200 करोड़ के अराउंड होगा. उसमें अगर मैं देखूं कि आपके भाई जो पैट मार्जिन हैं अगर मैं एज ऑफ नाउ देखूंगा सो आप देख सकते हो कि 10% से भी कम है आपके पैट मार्जिन. 5-6-7% के आपके पैट मार्जिन से. तो अगर मैं 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है 70-80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ का भी अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं 40-30-40 का मल्टीपल भी अगर लगाऊंगा तो 3,000-4,000 करोड़ का मार्केट कैप ही बनता है. अब वहां से आगे जाने के लिए पूरा का पूरा मार्केट आगे बढ़ना चाहिए तब आपका बढ़ सकता है. यू आर कम्पीटिंग इन दोज मार्केट्स. आप वाइन के लिए अगर कंपीट करो तो यार कंपीटिंग मेरे ख्याल में बियर के साथ कंपीट कर रहे हो आप शैंपेन के साथ कंपीट कर रहे हो. दोस्त काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल बी कंपीटिंग विद. And apart from that the management is in this particular case the management is not aggressive. Mr. Rajiv जी जो हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं. देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिविडेंड जबकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेट है रीपे करने के लिए. आपको केपेक्स करना है बट स्टिल ही chose to distribute dividend. I'm not sure why that was done. So those are few of the reasons. Apart from that, one of the reason is वहाँ पर जो ये भी है कि अभी जो हमारा यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो वहाँ के वाइन्स भी आएंगे यहाँ पर. सो Sula will be competing directly with those. So overall a good brand name but a small market over है हमारा यहाँ पर. उसके बाद मैनेजमेंट जो है हमारा वो भी बहुत अच्छा नहीं है. आई वुड से कि मैनेजमेंट इज नॉट वेरी एग्रेसिव और मैनेजमेंट इज नॉट वेरी वेल इन नॉट डूइंग अ वेरी गुड कैपिटल अलोकेशन यहाँ पर जिसके लिए. सो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसमें के लिए मुझे लगता है कि इनका मार्केट यहाँ पर शेयर प्राइस लाइक आई गेस 600-700 का टॉप बनाया उसने और वहाँ से इट्स लाइक 70-80% डाउन फ्रॉम देयर. सो कैन इट गो बैक? It can maybe if there's a bull market, but there I would avoid this particular company. Then there's a company named medplus which we discussed last time also. So medplus में आपका क्या है कि इनका फार्मेसी का रिटेल चेन है एंड आई गेस इंडिया में 2-3 चेन हैं जो दे आर लाइक वेरी विजिबल. दिस इज द सेकंड बिगेस्ट चेन आफ्टर अपोलो वहाँ पर. एंड लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड इन डिटेल्स वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ द विजन ऑफ द प्रमोटर इज एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि जो भी आपके ब्रांडेड वाले मेडिसिन हैं उनको वो जेनरिक से रिप्लेस करना चाहते हैं. सो अगर किसी ने उसके ऐड देखे होंगे मे बी समवन वुड हैव विजिटेड देयर स्टोर्स आल्सो. सो विद सी कि वहाँ पे जाकर अगर आपने मेडप्लस की मेंबरशिप ले रखी है विच इज लाइक 100 रुपीज अ ईयर सो आपको 50-60% ऑफ मिल जाता है उनकी दवाइयों पर विच इज लाइक द सेम सॉल्ट. लाइक आई वेंट वहाँ पर जो कफ सिरप था उस पर आई गेस 120 रुपीज लिखा था एंड आई गॉट इट फॉर 30 रुपीज. सो जो आंखों की दवाई लाइक फॉर माई मदर वेंट देयर टू बाय and the same medicine jo I guess I'm not remember the other company's name that was they were selling it for
400 something, and medplus gave it for maybe 90 rupees or something like that. So there's a big difference, that and the more and more people will come to know about this, the more and the more the business, I feel this business is very good. Actually, they are doing something good for the society also. And in this way they will be disrupting a lot of other small जो आपके मेडिकल स्टोर्स हैं उनको they will disrupt, and they will be directly competing with जो हमारी जन औषधि वाला प्रधानमंत्री जन औषधि जो हमारा है उसके साथ they will be competing with there. So that's how, आप देखें मार्केट में स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैव फॉलन अ लॉट, लाइक अपने पीक से 50-60% तक गिर गए हैं. While this company is not ready to fall 1000 something का उसका high, and then as of now they're trading at 820. करंटली कंपनी का अगर आप देखेंगे तो ROC जो है वो आपको 11 पर दिखाई देगा यहाँ पर, अगर आप देख भी सकते हैं, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू गो रीच क्रॉस 20% once the business stabilizes. Like they're expanding their stores and all operations and all those things, so once it stabilizes the ROC will jump, and then ROE will jump, all those things will happen. So I feel like this is a very this could be a very consistent business, like 10-15% say grow karne wala, and there's a long runway for the business. It's like the market is quite big for this pharmacy retail, and there is still a very small kind of a business in that particular market, while the competition, if I see, the major is like Apollo and then the retail, which are actually not posing any competition for them, and they are going to disrupt those retail small medical business shops, medical stores, you can see. The next business is Tilaknagar Industry. This business is also an alcohol company, and last time also we said, like in this case, and when I compared it with Sula, like I said, this case the management says, and that is something which get delivered in the case mein, while which was not happening in the case of Sula. So I said this is a better business, it looks like, from Sula. And अगर आप देखोगे तो उन्होंने Imperial Blue को acquire किया है, like Imperial Blue को last year से acquire, last year somewhere they acquired Imperial Blue approximately 3000 crores में. So Imperial Blue also doing some 3000 crores का revenue भी है उनका Imperial Blue का. So this seems to be a good company where 10 to 15% का growth guidance है and all those things. The management has delivered has delivered whatever they have said. All those things are there in this particular business. So this is one of the business here. And the last business is PB Fintech, which I thought maybe I'll discuss again. This was one of the businesses, one of the very first company जो हमने analyze किया था. I guess the price hasn't moved very much, and it made a high of 21-2200 somewhere last year, and वहाँ से 1500 का आ चुका है. Management has said initially कि वो अपने hospital chains वगैरह establish करेंगे. From there they will be selling their bundled policies and all that business. PB Health का जो उनका है PB वहाँ पर business. So this year FY26 they are expected to have a PAT of 750 crores somewhere approximately. So the PE, when we last I believe when we last made the video, the PE was more than 500, so PE has contracted to 120. This should be further coming down below 100 after this quarter. However, जो 750 crores का total इनका profit आएगा, उसमें से 300 maybe 300-350 crores somewhere around they are making from the interest income जो उनके पास cash है, the other income part जो है. By FY30, the business is expected to make a PAT somewhere around 3000 crores. That can be maybe 2800 crores or 3200 crores also. So that's a roundabout number. Now you can calculate the forward multiples based on that. Yes, the business is not, the valuations are very high, but this seems to be a very sustainable business, as we discussed in details our last video also. क्योंकि the reason being is this is a very आपको अगर यहाँ पर एक बार बंदे ने पॉलिसी ले ली, so they keep on renewing and the premium keep on coming. Then there are some media reports which says Bima Sugam has come, which can be a threat to the PB Fintech's business. Bima Sugam, there are like last 2 years I'm hearing that Bima Sugam will come and all those things will happen.
that they will be selling policies at zero. So, but there's a challenge which I see with the Bima Sugam is like, first of all, insurance is a push product. Very few people would be there जो जाएंगे and लेंगे वहाँ पे अपने आप से, राइट? पॉलिसीज इतना कि मैं जिनको बीमा सुगम के बारे में पता हो ना, बीमा सुगम हैज टू रन एड्स फॉर दिस if they want to compete with PB Fintech. Uh, the same model, other companies which are selling online insurance, they are also trying to compete with PB Fintech. But somehow the PB Fintech, they are available most of the cases in the first position when the ads come. And the second thing they would be doing is बीमा सुगम या तो कोई बंदा पॉलिसी सर्च कर रहा हो तो देयर विल बी लाइक कि उनका सर्च इंजन में आएगा. So PB Fintech would be leading on both of those places. Apart from that, the PB Fintech के पास जो advantage है मुझे लगता है कि they have a big telecaller team which call people to convince them ki, and tell them ki how this policy can be beneficial for them. Nowadays people come to home also, even कि भाई ये आपके policy के benefits हैं and all those things happen there. So those are the things I see happening there. So I believe like it would be tough. It would be very tough for for Bima Sugam to compete with PB Fintech. Apart from that, once their PB Health business is fully operational and then they start selling bundled policies, so that would be very again like, अगर मेरे पास जो पर्टिकुलर पॉलिसीज अवेलेबल हैं और वो पॉलिसीज केवल मेरी पीबी फिनटेक पर ही मिल रही हैं तो आप कुछ भी कर लो, देन तो बीमा सुगम का कोई वो दे कैन नॉट कम्पीट इन एनी वे कि अगर मेरे बंडल पीबी जो इंश्योरेंस के साथ जो इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मेरे बंडल पॉलिसीज हैं मेरे पीबी हेल्थ वाले जो केवल पीबी फिनटेक पर अवेलेबल हैं, तो then the person has to come here only. So I feel it would be very tough for Bima Sugam to compete with PB Fintech. Maybe आपने पहले भी से सुना होगा ONDC के केस में, when ONDC initially came and people were like, oh ONDC तो कोई charge नहीं करेगा and ONDC is a threat to Swiggy and Zomato and 20-30% स्विगी जोमेटो चार्ज करते हैं जबकि ओएनडीसी में तो इतने में हो जाएगा उतने में हो जाएगा एंड इट कैन बी सो इजीली डिलीवर्ड. ऑल दोस थिंग्स हैपन, बट how many of us are using ONDC to order food nowadays? Like, I guess very rarely. Or how many of us, instead of Amazon or Flipkart, we have shifted to ONDC, right? So very few people, very few, I guess, that would be like, because it's tough. These businesses are built over years. एंड एक स्केल तक लाने के लिए अगर बीमा सुगम को अपने एड्स भी रन करने हैं एंड दैट देयर वुड बी सम एम्प्लॉइज आल्सो, अगर आप जीरो कमीशन पे रन कर रहे हो तो वेयर इज योर रेवेन्यू मॉडल विल कम फ्रॉम, राइट? ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. सो आई बिलीव इट वुड बी टफ rather than कि आप केवल बोल रहे हैं उससे, तो काफी टफ होने वाला है. दिस इज गोना बी टफ. So this is, I just thought of discussing all these businesses with you. Apart from that, I have like 1 second. Yeah. So apart from that, like I have one small announcement to make. Announcement in the sense, not if someone wants to share his I just want to make a small business community in the sense of people uh, who are researching about the businesses and then maybe they are presenting the businesses kind of. So if someone thinks कि अगर ये business है where maybe they can they want my help, or where they want कि or they think that I can add some value to their, they would have been researching about some business and then they think कि अगर उनको कोई help चाहिए मेरी, so maybe they can reach out directly to me on Twitter. लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मे बी यू कैन डायरेक्टली मेल मी, आपको वो लिंक भी मेल में आईडी मेरा भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप अपना लिख कर भेजिए विच बिजनेस यू आर रिसर्चिंग एज ऑफ नाउ, और जो भी आपके बिजनेस का होगा आपने खुद कितना रिसर्च किया, ऑल दोज थिंग्स आप मेरे को लिख कर भेजें मेल में. What are the things you have seen, like आपने बिजनेस में जो भी देखा उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, what are the good things you have seen about the business, what are the bad things you have seen about the business, all those research आपने किए and where you want my help. So you can directly reach out to me on Twitter, we can connect over there, or you can mail me also, all those things. And then
I can maybe over the time, my only point is over the time, maybe we can have some good businesses here discussed, not only by me, but on by other people also. And this is like absolutely helping each other. Like it's not like I'm helping them, it's like they would also be helping me in that sense to know more and more about some other businesses. So this is I just thought, yeah, I'm cutting, and more and more businesses will get to know, because as a retail we have a limited resources and limited team, all those things. So अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, so it can be like कि if we are working as a team, maybe we are discussing the ideas and all. So then maybe we can have a better outcome as a retail investor. So this is what I thought. So videos, I hope I'll be able to make few videos more regularly. Not sure ki I will be releasing it on every week, but yeah, that will be more regular. Regular videos will be coming. Maybe I will release some videos on derivatives also, because I believe I have read a lot about derivatives. So I just thought of sharing. I should share that also. Derivatives also, specifically on the options part and how the things work and all those things. I will also share that those videos in बीच में आपके साथ, and how I'm analyzing the businesses, and if I go through some good article, maybe if I go through some good book and some good pointers I can take from there. So I will also share with them that also. So that's it. I want to share this with you guys. And अगर आपको कुछ भी questions हो and all, so maybe you can write there. Thanks a lot for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, so you can like, subscribe the channel, or comment for any questions, and you can also connect with me on other platforms also. Thanks a lot for watching.